friends, how are all of you? Hope you are all enjoying on the very first day of the new year. So I will also wish to extend my heartfelt warm wishes to all of you, and I wish that you spend this new year with lots of joy, happiness and your achievement. So today on the 1st January of this new year, I have come before you with a poem of class 11 English syllabus CBSE, and the name of the poem is Childhood, written by Marcus Nathan, and we shall deal with this poem today. Hope you will like this video and will be benefited by our new educational video. Stay with us and give us all kind of support. Don't forget to like, share and subscribe your own channel, Sanjay English Classes. Okay, so let's start. First I have to tell you something about the poet, Marcus Nathan. He is a Norwegian poet and a writer, the head of the Hatchery Innovations LMD, and he is best known for the book Thief and the Messenger, and this poem is also a significant contribution by this poet Marcus Nathan. It has 4 stanzas. 4 stanzas are not of all stanzas are not of equal length. But before I start this poem, I would like to say something about the central idea of this poem. Look at the poem. Childhood is a stage of innocence, whereas adulthood is a stage of experience. बचपन एक मासूमियत की समय है, जबकि एडल्टहुड है अनुभवी की समय। जब अनुभव हो जाता है, एहसास हो जाता है, बहुत सारी चीज हम लोग सीख लेते हैं, जान जाते हैं। Number 2, adulthood brings realizations of falsehood and dishonesty among the people. Adulthood एक ऐसी समय है जो हम लोग को एहसास दिलाता है ग्रोन अप पीपल में falsehood मतलब कि झूठापन और dishonesty बेईमानी के बारे में हम लोग का एहसास होता है। C, it also gives freedom, self assertion, confidence, individuality. एडल्टहुड के साथ साथ हम लोग को मिलता है आज़ादी, खुद को एक्सप्रेस करने का एक मौका मिलता है, आत्मविश्वास होता है, आत्मनिर्भरता होता है। एंड फोर्थ, childhood is never lost, it returns in the face of an infant with the same simplicity, innocence, joy, pristine beauty. और चौथी पॉइंट यह है कि बचपन कभी खोता नहीं है। एक पार्टिकुलर आदमी का बचपन पास हो सकता है, बीत जाता है, लेकिन वही सिंप्लिसिटी, खुशियाँ, जॉय, मासूमियत, हैप्पीनेस जो बच्चा में रहता है, जो बचपन में होता है, वो दूसरे छोटा एक बच्चा के फेस में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। सो ए चाइल्डहुड इज नेवर ओवर, ए पार्टिकुलर पर्सन's childhood may be over, but the same happiness, joy, innocence can be found in the face of another infant. So it's a kind of, and in this way the circle comes a full round. The circle comes a full round. Life goes on. As Rabindranath Tagore says in his poem, thine is the beginning, mine is the ending. There's a famous song in Bengali. Rabindranath Tagore wrote this song, and in English it is, thine is the beginning. Thine means your is the beginning, mine is the ending. তোমার হলো শুরু, আমার হলো সার. In this way. So let's begin this poem now. There are some word meanings here. Seemed means appeared, preached, sermonized, act, behave, lovingly, compassionately, whichever, any, producing, creating, thoughts, views, hidden, concealed, infant, small child, forgotten, unremembered. Now let's begin the first stanza. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? The poet asked this question. When did my childhood go? When was my childhood over? Was the day? Was it the day when I was no more 11? I ceased to be 11. I stopped being 11. And I realized that hell and heaven actually do not exist. A child believes in hell and heaven. He believes that if he does good thing, he will go to heaven. If he does bad thing, he will go to hell. But when he grows up, he realizes that those things really do not exist. उसको समझ में आ जाता है कि ये जो दोजख
और जन्नत है वो ज्योग्राफी बुक में नहीं रहता है। और इसका मतलब यही होता है कि रियल वर्ल्ड में इसका कोई मतलब कि ये नहीं होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। और वो एक ऐसी रियलाइजेशन है, वो बचपन का पार्ट खत्म हो जाता है उसी समय से। सो देयरफॉर कुड नॉट बी, ही रियलाइजेस दैट एज हेल एंड हेवन डू नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, सो दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी ऑल्सो। क्या उसी दिन ये रियलाइजेशन के साथ साथ ही क्या मेरा बचपन खत्म हो गया था? ये सवाल पोएट पूछ रहे हैं। अभी हम लोग दूसरा स्टैंजा में जाएंगे। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। क्या वो समय है जब हमको समझ में आया था कि एडल्ट्स लोग बड़े आदमी वैसा नहीं होता है जैसा वो दिखते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, वो प्यार की बात बोलते हैं, वो बात कई बार बताते भी, हम लोग को प्रीच करते हैं, सरमोनाइज करते हैं, समझाते हैं, पर डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। लेकिन जब समय आता है वो काम करने का तो वो लविंगली काम नहीं करते, प्यार के साथ काम नहीं करते हैं। बहुत समय वो गुस्से के साथ काम करते हैं, बहुत समय नफरत दिखाते हैं। वाज दैट द डे, मतलब क्या उसी दिन जिस दिन हमको समझ में आया कि एडल्ट पीपल दे फॉलो डबल स्टैंडर्ड, दे आर आर्गुमेंटेटिव, वायलेंट, डिस्कोर्टियस, men of broken trust? Was it the day when I realized that adult people mostly are hypocrites? What they say and what they do, these two things are completely different. क्या उसी दिन हमको समझ में आया कि मेरा बचपन खत्म हो गया और मैं एडल्टहुड की दुनिया में कदम रख रहा हूं? ये सवाल पोएट सेकंड स्टैंजा में उठा रहे हैं। That means the adult people, they speak of love, they sermonize love, but when the time of action comes, they do not behave in the loving manner. Third stanza. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? Again the poet asking the same question, that when was my childhood over? Was it the day when I realizes that I have become an individual person? I am not repeating or reproducing the words and thoughts of other people. I am speaking from my own viewpoint. I am telling what I actually felt. I am not saying the words of my parents, my teachers, my the educators or any ideas that I have learned from the book. Rather, these are my own ideas, and these are the rational thinking, individualist viewpoint. These are the signs of adulthood. Adulthood does not mean bad things actually. It gives us very good things also. And this individual viewpoint, individual thinking, personal thinking, these are the gifts of adulthood. And when a person realizes, when a person can express his or her own views without taking cues or help from others, it means that he or she has stepped in the world of adulthood. वो adulthood के दुनिया में कदम रख रहे हैं, क्योंकि वो अपना सोच, अपना विचार बताने की क्षमता उसमें है। वो कोई पेरेंट्स का, टीचर्स का या किताबों से लिया हुआ आइडिया वो नहीं दोहरा रहा है। Now we come to the last stanza. It's a very wonderful, it's a climax actually. Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. In the last stanza, the poet is not using when but where. Where did my childhood go? And the poet knows where his childhood is. He knows that it is in a forgotten place, unremembered place. It is hidden in an infant's face. His lost childhood can be found in the face of an infant. And that's all I know. And that is the satisfaction, that is the consolation of the poet. That is the biggest joy of the poet. That he personally does not belong to the childhood stage, but his childhood is not lost. It is found in an infant's face, and there he will find his childhood. So we can say that it's a journey from taking an idea from the William Blake's poem. We can say that this poem is a journey from the world of innocence to the world of experience. And children, in comparison of the adulthood, how can we express the children? Children having no pretensions or rationality, they trust others unconditionally,
फुल ऑफ इनोसेंस, वो दूसरों पर भरोसा करता है, पूरी इनोसेंस से, मासूमियत से भरा हुआ रहता है। एडल्टहुड में बहुत सारा अंतर आ जाता है जो हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, लेकिन उसमें खुशी की बात यही है कि बचपन बीतने के बाद भी कहीं ना कहीं रह जाता है। अब जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैज सेड कि ए चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, सो इन द फेस ऑफ एन इन्फेंट वी कैन फाइंड द लॉस्ट चाइल्डहुड ऑफ ए ग्रोन अप पर्सन। ठीक है, इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। पोएटिक डिवाइसेस ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, द स्पेशल यूज ऑफ सम सेंटेंसेस। ठीक है, देखिए इसमें पोएटिक डिवाइस क्या है। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, ये रिफ्रेन है, ये लाइन भी रिफ्रेन है। वाज दैट द डे, क्योंकि ये जो रिफ्रेन क्या होता है, जो लाइन कई बार रिपीट होके आ जाता है, दैट यू कॉल रिफ्रेन। ठीक है, हेल एंड हेवन, ये एंटीथेसिस है क्योंकि दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ इसको हम बैठाए हैं। एक चीज रिपीट हो रहा है इसलिए आप एलिटरेशन भी इसको कह सकते हैं। डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, ये एक्चुअली एंटी क्लाइमैक्स है, क्योंकि देखिए इसमें जस्ट इसका पहले वाला लाइन में क्या था, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड पिच्ड ऑफ लव, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि उसका काम भी लविंगली होगा, लेकिन पोएट बोलने के बाद डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, ऑपोजिट चीज आ रहा है, अचानक आ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लाइमैक्स। ओके, देन इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, इट मींस चाइल्डहुड, ये नॉन लिविंग थिंग है, इसको हम लोग लिविंग बीइंग के तौर पे बता रहे हैं, तो इससे पर्सनिफिकेशन। दैट द डे, टी टी रिपीट हो रहा है, माई माइंड, एम एम रिपीट हो रहा है, whichever way, ww रिपीट हो रहा है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एलिटरेशन। और सेकंड लाइन सेकंड स्टैंजा इस पोएम का, सेकंड लाइन सेकंड स्टैंजा एंजाममेंट है, क्योंकि वहां देखिएगा बीच में कोई आपका पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं एंजाममेंट। राइम स्कीम इसका क्या है, राइम स्कीम अलग अलग टाइप का है, सब में बराबर नहीं है। फर्स्ट स्टैंजा का जैसा है ए बी बी सी सी डी, लाइन देखिए, लास्ट लाइन से हम लोग राइम स्कीम बना निकालते हैं, जैसे गो, 11, हेवन, जियोग्राफी, बी, डे, ए बी बी सी सी डी। और लास्ट लाइन स्टैंजा में जाइए, वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, गो, प्लेस, फेस, नो, सो दिस विल बी ए बी बी अगेन ए। In other stanzas there might be some other rhyme scheme, it's a very easy thing for you to find out. Now what kind of questions may come from this poem? Like questions can come, how does the poet conclude that hell and heaven are imaginary places? Bring out the hypocrisy that the adults exhibit with regard to love. How important was the discovery of independent thinking? How is the poet's childhood hidden in an infant's face? According to the poet, when does a child become an adult? How can we differentiate two stages of life? And what are the positive and negative aspects of adulthood? Such questions, some short questions and MCQ pattern of questions may come in the examination. But now I think that we have dealt with all the aspects of this poem, some nuances, some very different kind of things that come in there that arise from this poem, like the word meanings and the meaning of the sentences, lines, and then the poetic devices. All those things have been explained here. Having any kind of doubt, you can watch the video several times. You can contact with me personally. So I hope that this poem I have tried my best to make clear to you. And if you follow this video, I am sure that you will have no problem to understand this poem and to write answers in the examination. So thank you very much for staying with me. Once again, I would like to request you to like, share and subscribe our channel. That means actually that is your channel. And I extend my good wishes to all of you. I wish you a very, very happy new year to all of you. Thank you very much.